Hello everyone, I am Pratibha Patel, Assistant Professor in Smriti College of Pharmaceutical Education, Indore. Today we start congestive heart failure or cardiac heart failure. So, heart failure, a chronic condition in which the heart doesn't pump blood as well as it should. Heart failure can occur if the heart cannot pump or fill adequately. So we can say a condition in which the heart is unable to pump sufficient blood to meet the metabolic demand of the body. Now the classification, first category is inotropic drugs. Cardiac glycosides drugs are digoxin and digitoxin. Sympathomimetics, dobutamine and dopamine. Phosphodiesterase third inhibitors, ambrinon. Second category is diuretics, high ceiling diuretics and thiazide-like diuretics. Third category is inhibitors of renin-angiotensin system, AC inhibitors and AT2 antagonist. Next category is aldosterone antagonist. Drug is spironolactone. Next one, vasodilators. Vanodilators, glycerol trinitrate and arteriolar dilator, hydralazine. And some other drugs which is used in the treatment of CHF, bosentan, tejosantan and nasiritide. Now first category is cardiac glycosides. So cardiac glycosides are obtained from Digitalis purpurea, Digitalis lanata. Okay, so cardiac glycoside represent a family of a compound that are derived from foxglove plant, that is Digitalis purpurea. Increase the output force of heart and decrease its rate of contraction by acting on the cellular sodium potassium ATPase pump. Cardiac glycoside inhibit this sodium potassium ATPase pump. Now this is the structure of cardiac glycosides. So the following structure features of cardiac glycoside are important. First one is steroidal A glycon known as renin. This is a glycon part is also known as renin. Okay, and here at the third position sugar moiety attached. Sugar moiety is known as glycon part. Okay, so sugar attached to the renin in sequence. Most common sugar are D-galactose, D-glucose and L-raminose. 13 beta OH group is present. Numbering start from here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay, so at 14th position beta OH group is present. 14th position this one. This is a beta hydroxyl group. जब बीटा कॉन्फ़िगरेशन होता है तो उसको हम एक बोल्ड लाइन से डिनोट करते हैं और यदि अल्फा कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होता है तो उसे हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं. ओके, सो यहाँ पर जो है ये क्या है, एक बोल्ड लाइन है, इसलिए कौन सा है 14 बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ओके, next point is 17th alpha beta unsaturated lactone ring. It may be a 6-membered or 5-membered. If the lactone ring is 5-membered ring, then they are called cardinolites, or if the lactone ring is 6-membered ring, they are called bufadinolites.
The cardiac glycosides occur mainly in plants from which the name have been derived: Digitalis purpurea, Digitalis lanata, and Strophanthus gum. First, we can see aglycon moiety. So the term janin at the end refer to only the aglycon portion without the sugar. Janin हम किसको कहेंगे? जो स्टोइडल moiety है without sugar. This one. Okay. So the aglycon portion of cardiac glycoside is most important than glycon portion. Okay. This steroidal structure or general structure of aglycon part is cyclopentanoperhydrophenanthine nucleus. Sugar moiety or glycon part. The glycoside usually contain 3 to 4 sugar attached at C3OH. थर्ड पोजीशन पर जो OH ग्रुप अटैच है उससे ही शुगर मॉइटी अटैच होती है. The sugar most commonly used include L-ramenose, D-glucose, D-digitoxose, D-digitallose, and D-diginose. Besides glucose and ramenose, they usually contain deoxy sugar. These sugar exist in cardiac glycoside in always in beta configuration. शुगर मॉइटी जो अटैच होती है थर्ड पोजीशन पर वो हमेशा बीटा कॉन्फ़िगरेशन में ही अटैच होती है. These are the structure of cardiac glycoside. This is the aglycon part and this one is glycon part. Okay. R define the class. If R is 5-membered ring, then it is called cardinolites, and if R is 6-membered ring, then it is called bufadinolide. This one. Two class cardinolide and bufadinolide. If R is 5-membered ring, it is called cardinolide, and if R is 6-membered ring, it is called bufadinolide. Structure features of cardiac glycoside. This is the aglycon part. 4 rings are present: A, B, C, and D. Okay. So steroidal nucleus must be present. 3 beta OH group involved in glycosidic linkage. 14 beta hydroxyl group at C14 position. AB ring junction is in cis position. Here you can see this position and this position. यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन अटैच है और ये CH3 ग्रुप अटैच है, ये दोनों ही बीटा कॉन्फ़िगरेशन में अटैच है, इसलिए A और B जो रिंग है वो सिस कॉन्फ़िगरेशन में होगी. लेकिन B और C रिंग इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इस जंक्शन में, यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो तो बीटा कॉन्फ़िगरेशन में है, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो अल्फा कॉन्फ़िगरेशन में है, इसलिए B और C जो रिंग है वो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में होगी. ओके. एंड C एंड D अगेन इन सिस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि OH भी आपका जो है बीटा कॉन्फ़िगरेशन में है और CH3 भी बीटा कॉन्फ़िगरेशन में है, तो इसलिए CD रिंग जो है वो भी सिस कॉन्फ़िगरेशन में होगी. Additional OH group at C5, 11 and 16 may be present. And the presence of lacton ring, either 5-membered ring or 6-membered ring. This is the general structure of cardiac glycosides. These are the drugs: digitoxygenin, digoxygenin, getoxygenin, oavagenin, stropanthidine, and bufalin.
a glycan portion of the cardiac glycosides. Now structure activity relationship. So the presence of OH group in C14 position make the glycoside very active. Here C14 पोजीशन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है वो एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड है and give rapid action in the body. But if we change it to hydrogen group, the drug will be inactive. यदि C14 पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है उसको हम हाइड्रोजन ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो जो कंपाउंड बनेगा वो इनएक्टिव होगा. The presence of alpha and beta unsaturated lactone ring increase the activity of cardiac glycoside. जो आपका 5 मेंबर और 6 मेंबर इलेक्ट्रॉन रिंग प्रेजेंट होता है वो इंक्रीज करता है कार्डिक ग्लाइकोसाइड की एक्टिविटी को. बट इफ वी मेक इट सैचुरेटेड द कार्डिक ग्लाइकोसाइड विल लॉस इट एक्टिविटी. क्योंकि जो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन रिंग जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड इलेक्ट्रॉन रिंग प्रेजेंट होती है 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग वो अनसैचुरेटेड रिंग होती है. लेकिन यदि उसमें हम बॉन्डिंग कर दें उसको सैचुरेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड एक्टिविटी है वो कंप्लीटली लॉस हो जाएगी. ओके. द रिंग जंक्शन. Third point is the ring junction cis trans cis make the nucleus very stable. आपने देखा था ए ग्लाइकॉन में जो 4 रिंग अटैच है उसमें ए और बी सिस कॉन्फ़िगरेशन में थी, बी और सी ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में एंड सी एंड डी सिस कॉन्फ़िगरेशन में थी. तो रिंग जंक्शन क्या हो गया सिस ट्रांस सिस मेक द न्यूक्लियस वेरी stable, so more active. The sugar part increases absorption and distribution of cardiac glycoside in the body. Sugar part, it may be glucose, rhamnose, saccharose and digitoxose. Okay, thank you.